Hey guys, Alex here and welcome to my YouTube channel. So guys, in today's video I'll show you guys how you can do an easy skull makeup look. So let's do the makeup. Before doing the makeup, you need to do your foundation and the concealer and a powder first, because we need to have a base to create the look. So I have done my base. I have put on the foundation, concealer and powder, everything. So after that I'll start drawing the outer line for the skull by using an eye pencil, a kajal, and first I will be starting from the forehead. Like this. Okay, first of all it's going to look weird, but later on सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो and then after that I'll be drawing on here, और इसके बाद इधर भी सेम. Then after that like this from here. Hmm. um, then after that I'll be adding like this. देन उसके बाद मैं फिर से इधर ऐसा करूँगा, बनाऊँगा ये like this. इसको जोड़ दिया मैंने. देन आफ्टर दैट नोज पे भी सो गाइस, तो आउटलाइन जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है. एंड देन उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्लश लूँगा, सो लाइक दिस. एंड देन इसके बाद आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इन ऑन हियर, बिकॉज इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा डार्कन करूँगा. Then after that I'll blend the nose. नोज़ को यहाँ पे हम लोग काला बनाएंगे. नीड टू मेक, तो इसके लिए हम लोग पूरा नोज़ जो ये एरिया ड्रॉ करके रखा है उसको पूरा हम लोग ब्लैक कर लेंगे. पहले ब्लेंड कर लेते हैं इसको. सो गाइस, तो आफ्टर द नोज़ अभी हम लोग ये बाहर जो आउटलाइन लगा अप्लाई किया है ना, इसको हम लोग बाहर की तरफ थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे ऐसा, ताकि थोड़ा सा हम लोग डार्क डीप इफेक्ट दिखा सकें. So guys, so after blending in on the outside, now I'm going to draw the eye, and I'm gonna draw some kind of, not like a circle, but kind of like a square भी नहीं, मतलब ऐसा शेप ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, like this. Then after that let's fill in. सो वैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं बस ये एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग जस्ट दिस वन प्रोडक्ट, दैट इज़ दिस आई काजल.
So guys, so after the eyes I will add some teeth. So for that I'll be drawing here like this. I'll make some of them short, some of them long. So guys, so this is it. This is the whole makeup look all complete, and I hope that you guys find it easy and helpful. And if you guys do enjoyed watching this video, then please do like this video and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye guys.